Hello and welcome once again to Module 3. I hope all of you guys are doing well, and I hope the first two modules that you guys took were helpful. आज का जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा टेक्निकल एनालिसिस का पहला लेसन. सो आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप ये पूरा मॉड्यूल बहुत ध्यान से सुने. जिस जगह पे आपको कन्फ्यूजन हो जाके रिवाइंड करके फिर से सुने सो योर कन्फ्यूजन gets cleared. Today we will be talking about the foundation of crypto and the foundation of technical analysis, whether you are trading stocks, whether you're trading crypto. जितने भी बड़े traders हैं वो technical analysis की ये चीज़ लाजमी यूज़ करते हैं and that thing is called market structure. So today we will be going over what market structure is in crypto, how we can use that, and then I will talk to you guys about RSI, a relative strength index, which is over here, and then QQE mod. These are again two indicators that I use. अगर आप मेरी settings use करना चाहते हैं तो during the lecture I will also give you my settings, and then lastly I will talk about what are divergences. Those are also very important to understand, लेकिन we will take it step by step. And I suggest कि जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वैसे आप नोट्स लेते रहिए, whether it's in your phone or whether it's you know on a laptop, but it's very important to know these things and then obviously इनको बाद में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की. मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? एंड बाय द वे जिस तरह मैं ये आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा या बताऊंगा, देन आई विल गो एंड ओपन अप अ चार्ट एंड देन शो यू लाइव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट दीज थिंग्स आर. नाउ I told you guys yesterday that this term called DDE, not yesterday, I'm sorry, I meant the last module, module 2. DDE, data determines everything, हम बार बार यूज़ करेंगे और आज के लेक्चर में भी वो एक कोरिलेशन हम फिर से ड्रॉ करेंगे. बट लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर इज़. मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं. There are two kinds of market structure. There is a bullish market structure where the price goes up, and a bearish market structure where the price goes down. Now, please don't confuse this with bullish and bearish cycles. Cycles लंबे टाइम पीरियड पे हम बात करते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है. बुलिश साइकिल्स के अंदर मार्केट्स पंप करती हैं, प्राइसेस ऊपर जाती हैं, बेरिश मार्केट के अंदर नीचे आती हैं. इसी तरीके से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर the price of a coin, the price of an asset follows a certain pattern जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. And then bearish market structure के अंदर um, it also follows a pattern that I will show you. But before we talk about these patterns, it is also very important for you to learn about time frames. What are time frames in crypto? So if I open the Bitcoin chart right now, और इसको मैं अगर रीसेट करूं चार्ट को, लाइक हियर, आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी 12 आवरली चार्ट खोला है. मतलब एक कैंडल जो है, दिस वन कैंडल रिप्रेजेंट्स 12 आवर्स. अगर मैं इसको चेंज करूँगा टू 1 आवर, then each candle that you're seeing represents 1 hour. मतलब फॉर एग्जांपल अगर 12 बजे ये कैंडल ओपन हुई है तो 1 बजे क्लोज हो जाएगी, और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जितना भी प्राइस एक्शन हुआ है, जिसमें बिटकॉइन 29,950 से 30,123 पे गया है, ये 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 आवर. जो ही 12 से 1 बजे हैं, कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल खुली है. नाउ अब 1 से 2 जब बजेंगे फिर कैंडल क्लोज होगी, सो फोर्थ एंड सो ऑन.
ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम 4 आवरली टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे तो ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 4 आवर्स, मीनिंग इफ दिस कैंडल started at 12 p.m., this candle will close at 4 p.m. So that's how टाइम फ्रेम्स वर्क. अब मेन जो है दो टाइम फ्रेम्स होती हैं. एक होती है एल टी एफ. एल टी एफ मीन्स लोअर टाइम फ्रेम्स, एंड देन देर इज एच टी एफ, हायर टाइम फ्रेम्स. याद रखिएगा, हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम्स को पहले देखते हैं एंड देन वी गो ऑन टू लोअर टाइम फ्रेम्स. हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर आपके 12 आवरली chart is considered HTF, 1 day is considered HTF, and then 1 week time frame is also considered HTF. Okay, again, if you have any confusion, please go back and listen to it again. And LTF के अंदर, lower time frame के अंदर, we have the 15-minute chart, the 30-minute chart, the 1 hour chart, and then the 4 hour chart. Okay, so मैं आपको जो भी एग्जांपल दूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, मैं आपको बताऊंगा इसको हम एल टी एफ पे देख सकते हैं, एच टी एफ पे भी देख सकते हैं. यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट एच टी एफ, हायर टाइम फ्रेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्रो पिक्चर ऑफ अ कॉइन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि ये कॉइन, कोई भी कॉइन 1 डे पे बुलिश हुआ हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि एक दिन में ये पंप करेगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर टाइम फ्रेम. सो इफ़ फॉर एग्जांपल आज 12 बजे मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इट कैन पंप, सो दैट मीन्स इट कैन पंप ओवर अ पीरियड ऑफ 1 डे. बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्मॉलर ट्रेड एंड आई से कि मुझे लगता है कि ये कॉइन विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स पंप कर सकता है, तो I mean that I'm talking about a lower time frame. So again, 15-minute, 30-minute, 1 hour, 4 hour can be considered LTF, lower time frame, and this is the micro picture. क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें, मैं भी आपको बताता हूँ आगे, and then HTF is 12 hours, 1 day, 1 week. Okay. So for example, the reason why I tell you HTF, higher time frame, is important is because अगर एक दिन के अंदर in within the 24-hour period, if you look at Bitcoin on HTF, अगर 30,000 पे उसकी प्राइस स्टार्ट हुई आज 12 बजे और कल 12 बजे उसकी प्राइस फिर 30,000 पे आई होती है, इसका मतलब है कि एक दिन के अंदर कोई इतनी सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज नहीं हुई. ओके, so that means if it started at 30,000 and went to 30,300, 30,400, 31,000, and then came back down to 30,000, that means that over a period of 1 day इतना प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं हुआ. सिमिलरली अगर हम 15 मिनट्स की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि 15 मिनट्स के अंदर बिटकॉइन माइट गो फ्रॉम 29,000 all the way up to 30,000, लेकिन in the next 15 minutes it might also come back down. So we always consider HTF first, and we will go in depth about this also, but for now अभी के लिए सिर्फ ये जहन में रखें कि there are two things that you need to remember in terms of time frames. LTF मतलब lower time frame, HTF मतलब higher time frame. Now coming back to market structure, मैंने आपको बताया था हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें अभी स्टार्ट में पढ़ेंगे, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर. लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर इज़. ठीक है, अगेन मैंने आपको जैसा बताया, बुलिश का मतलब है कि प्राइस हम एक्सपेक्ट करें कि ऊपर जाएगी. बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी भी कॉइन को, ऑल्ट कॉइन हो, बिटकॉइन हो, आप बेशक उसको LTF पे देख रहे हैं, बेशक उसको HTF पे देख रहे हैं, अगर वो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे तो इट विल मेक हायर हाइज एंड हायर लोज. अभी इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है.
बुलिश, जब आपने जहन में कभी भी आपसे कोई पूछे कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, योर माइंड शुड से HHNHL, हायर हाइज एंड हायर लोज. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी ऑफ व्हाट higher highs and higher lows look like. Okay, so let's assume we are looking at the price section of a coin, किसी भी coin को जो किसी भी exchange के ऊपर list हुआ है, and it starts to do something like this. White line is where the price starts, okay, and it starts to do something like this. So now what it's doing is it's making higher highs and higher lows. I'll tell you why. So for example, $1 पे price start हुई है, okay, so it goes from $1 to $3, okay, and comes back down to $2, okay. ये आपका पहला high है, this is your first high from $1 to $3. If you see the next high, it is higher than this previous one. इस वाले high से अगला high ऊपर बने. So if this is $3, you can say this is $5. If this is $5, you can say this is $7. If this is $7, this you can say is $9. तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से प्राइस जा रही है वो हायर हाइज बना रही है, मतलब पिछले हाई से ज़्यादा हाई बना रही है. सो ये आपका हाई है, देन हायर हाई, देन higher high, and then finally higher high again. So $3, $5, $7, $9 price is going higher. अब जब ये रीटेस्ट कर रही है, हमने हायर हाई देख लिया किस तरीके से बनता है. Now we will talk about higher lows. What are higher lows? So after going at $3, इसने आके रीटेस्ट किया, and we will talk about retest also, don't worry. इस ये आपका एक लो पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट लो बना एंड देन इट स्टार्टेड पंपिंग अगेन. इफ यू सी द नेक्स्ट लो, it is higher than the previous low. If you see the next low, it is higher than the previous low. That means it keeps making higher lows, and this makes higher highs. High, higher than the previous high, higher high, higher high. Then low, ये आपका पहला लो है, हायर लो, हायर लो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इफ यू आर कंफ्यूज्ड then please go back and watch it again, but I will repeat it one more time. ये अगर प्राइस इधर से स्टार्ट हुई है, ये आपका हाई पॉइंट है, ये आपका लो पॉइंट है, ठीक है. जो आपका अगला हाई है वो पिछले वाले से ऊपर बने, इसका मतलब है ये हायर हाई है. उससे अगला जो हाई है वो इससे ऊपर बने, दैट मीन्स हायर हाई. सो इट्स फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेयरकेस. एंड देन आपके लोज, ये पहला लो है, आपका जो अगला लो है, इट्स कम डाउन till here, and but it's higher than the previous one, so higher low, and then higher low again. So now what we'll do is we will take an example of this and watch the Bitcoin chart on HTF, higher time frames, and you will automatically see what I mean when I say higher highs and higher lows. अभी मैंने इस तरह आपको बताया था, HTF मैंने खोला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. You can look at it on any time frame once you learn how to do this. But actually I think we should, yes. So now I'm on the daily time frame, right? As you guys can see, I'm on the daily time frame, and we're going to analyze the chart from this area. Okay, so this area, इस area से हम इसको analyze करेंगे. Let me quickly delete these lines and make them again for you. So let's say for example I say that हम इधर से start करते हैं HTF के ऊपर. Do you see how it's making higher highs and higher lows? Price goes up, goes down, goes up, goes down, goes up,
goes down, goes up, goes down. So it's making higher highs and higher lows. ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट्स मेकिंग सॉर्ट ऑफ अ स्टेयरकेस पैटर्न. इसका एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं हम. If I delete this line, if I delete this and come over here, और मैं अगर आपको बोलूं कि आप इसको एनालाइज करें, इस एरिया को एनालाइज करें, तो यू कैन अगेन सी, अगर इधर से प्राइस हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट करें, ये आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका हाई, ये आपका लो, this is your high, this is your low, again this is your high. This is a perfect example. Again आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो you will understand. But देखें, ये आपकी प्राइस स्टार्ट हुई, this is your high, this is your low, higher high. Why? Because जो previous point था ये वाला, it's higher than the previous one. Then your low is over here, this low is higher than this one, that means higher low. Again फिर high is higher than this one, and this low is higher than this one, that means higher low. So bullish market structure के अंदर we make HHHL, higher highs, higher lows. I hope all of this is clear to you now, and you can practice this by looking at different chart patterns. And if you get confused and you don't understand candles, आप higher highs, higher lows locate नहीं कर सकते, you can always go into here and see the line, and you will see that अगर हम इधर से start करें, देखें इधर से अगर हम start करें इधर से, so again high, low, high, low, high, low, high, low, and then like that, again following the perfect higher high, higher low pattern. So this is what higher highs and higher lows consist of. Now we're going to talk about bearish market structure. हमने bullish की बात कर ली, अब हम बात करेंगे bearish market structure की. So let's go into what bearish market structure is. Okay, so we will again close this down and we go back to this line. Now the thing that you need to remember is that in a bearish market structure, whether you are looking at HTF or whether you're looking at LTF, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कॉइन किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाएगा. ओके, सो इट विल मेक लोअर हाइज LH एंड LL, लोअर हाइज. बुलिश में HHHL था, इसमें है LH and LL, lower highs, lower lows. Now we will see an example of what a lower high and a lower low looks like. So let's assume that हमने एक coin लिया है and it does something like this. It pumps really high and it does this, starts to do this, and people who bought over here are going to be the people who will start crying and say कि एक दफ़ा जब इधर आएगा they will start praying कि I hope this goes up once. एक दफ़ा ऊपर चला जाए तो बस उसके बाद मैं क्रिप्टो छोड़ दूंगा. वो इधर तक आता है, उनको लगता है कि बस अब ये इस हाई को तोड़ देगा, उसके बाद it goes over here, they get more worried, थोड़ा सा पम्प करते हैं, फिर उनको आसरा मिलता है, फिर इधर नीचे आते हैं, and eventually at this area is where they get depressed and sell for a loss. But what they don't understand is how a market structure works. अगर उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर का पता होता, फर्स्टली वो इस जगह पे बाय ना करते, और अगर वो देखते कि लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे तो they would have exited timely and taken a smaller loss and recovered it in the next one. So that's why I say risk management is very very important. Nonetheless, let's continue. इधर से हमने स्टार्ट किया, ओके, $1 से आप अज्यूम करें कि $10 तक चला गया, ठीक है. सो दिस इज़ योर हाई, दिस पॉइंट इज़ योर हाई, ओके.
Now price goes down, this is your low, ठीक है, high, and this is your low. अब जो आपका next high है, this high is lower than the previous high. You see how अगर इधर से $1 से $10 तक है, तो this is $8, this is $6, this is $4, this is $2, and again back to 1. Okay, so what it's doing is high, lower high, because पिछले high से इस वाले high से the price is lower. And again मैंने बड़ी ज़बरदस्त मोनालिसा की ड्राइंग बनाई, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, लेकिन अगेन आपका अगला जो हाई बना है इट्स लोअर देन दिस वन, देन अगला जो हाई बना है lower than this one, so hence called a lower high. And now we will talk about lower lows. It's basically the opposite of higher highs and higher lows. It's following a staircase pattern but towards the downside. इसी वजह से इसको हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं. बेरिश मतलब प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस डंप कर रही है, लोग प्रॉफिट्स ले रहे हैं. सो दिस इज योर लो, ओके, ये आपका लो है, एंड देन दिस इज योर second low, but it's lower than the previous one, so lower low. This low is lower than this one, so lower low. This low is lower than the previous one, meaning lower low. Okay, again अगर आपको कोई confusion है, you can go back and watch this again, but we will for time's sake, and because we have to cover more things, हम एक example देख लेते हैं, and then we will move on to the next thing. You can always rewind and go back. So again I'm going to open Bitcoin on the daily time frame, and टाइम फ्रेम खोलते साथ ही हमें ये देखें आपकी आंखें इवेंचुअली इनको स्पॉट करना शुरू हो जाएंगी मार्केट स्ट्रक्चर को. ओके, so if we analyze this market structure all the way from top over here, you see how it's making, if this is your high, this is your low, this is your high, this is your low, this is your high, this is your low, again high, and then low. So it's made lower highs because again ये आपका high point है, the next high is lower than this one, hence a lower high, the next high is lower than this one, hence a lower high, the next one is lower than the previous one, hence a lower high. Lows को अगर आप देखेंगे तो this is your first low, the second low is lower than this previous one, hence a lower low, this low is previous than uh, this low is lower than the previous one, hence a lower low. So I hope you're able to understand what lower highs and lower lows are. Okay, so now that we've looked at that, आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है किस भी टाइम फ्रेम के ऊपर. You guys need to go and look at different coins. I can give you names of several coins जिस पे आप जाएं और प्रैक्टिस करें थोड़ी सी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर. इट्स फ्री. लोअर हाइज लोअर लोज कि ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई market structure. Now keep in mind, market structure is not the only thing that you will need to learn. You will need to learn all these other things that I will teach you in this crypto mastery course, and once you learn these things you will combine them, and inshallah you will become a better trader. So we're done with market structure. Now let's move on to RSI. RSI किस चीज़ को बोलते हैं? So now if you go and see um, this purple area, you're only going to focus on the purple line for now. Okay, so the purple line that you see is called the RSI, also known as the relative strength index. आप indicators में जाके जब लिखेंगे तो RSI आ जाएगा, लेकिन if for example you want to use my RSI settings, sorry, oops, let me quickly fix this. अगर आप मेरी RSI settings को use करना चाहते हैं तो I will give you my RSI settings also once I am able to fix this back again. There we go. Okay, so right here it's called RSI, relative strength index.
अब जो इसमें चीज़ आपने याद रखनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं overbought zone and oversold zone. Okay, so I'm sure you guys, if I make this bigger, याद रखिएगा अभी मैं RSI को HTF पे देख रहा हूँ, अगेन हायर टाइम फ्रेम पे। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं oversold zone. Okay, so I have marked the oversold zone, and this is called the overbought zone. Okay, so 20 से स्टार्ट होता है, सॉरी 30 से स्टार्ट होता है oversold, and 70 से start होता है overbought. Now again, whatever coin that you're looking at, whatever time frame that you're looking at, these things will work. And once you understand how these things work, you can use this along with market structure, and it will help you. And as we move along in this lecture, आप बाकी चीज़ें भी combine कर सकते हैं, and your understanding of crypto will inshallah get better. So now ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने अभी चार्ट क्लोज किया हुआ है बिटकॉइन का, क्योंकि हम बिटकॉइन को भी देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस वर्क्स। ओवरसोल्ड का मतलब है व्हेन एनी कॉइन, सिंस वी आर लुकिंग एट बिटकॉइन नाउ, इट एंटर्स द ओवरसोल्ड जोन ऑन एनी टाइम फ्रेम, वेदर इट्स LTF और वेदर इट्स HTF, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने ये कॉइन को बेचा है, इस कॉइन के अंदर डंप आया है। डंप मीन्स दैट इट्स बिकम बेरिश and it's in the oversold zone. And anytime that you see a coin in the oversold zone, you can expect that the price will bounce back up. So now coming to the overbought zone, when a coin comes to the overbought zone, इसका मतलब है कि ये कॉइन बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, LTF पे या HTF पे, और चांसेस हैं कि इधर से ये कॉइन, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में लोग प्रॉफिट लेंगे, तो ये इधर से गिरेगा। ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो, बट आपको एक टर्म मैंने बताई थी जो मैंने बोला था मैं बार बार यूज़ करूँगा, विच इज़ DDE, data determines everything. So what I'm doing now is I'm gonna open the Bitcoin chart, okay, on the daily time frame. आप ये देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मैंने खोल दिया बिटकॉइन का चार्ट, एंड यू सी हाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे विच इज़ 19,000, हम इसको मार्क कर लेते हैं एक्चुअली, 19,000 पे बिटकॉइन ओवर हियर ऑन द RSI is at about RSI level 30 ओवरसोल्ड। इसका मतलब है कि क्या, कि इधर से चांसेस हैं कि दिस विल रिवर्स एंड गो बैक अप। याद रखिएगा हमेशा पहले HTF को देखते हैं। HTF हमेशा बेटर रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को। अगर HTF पे RSI इधर आई हुई है, इसका मतलब है कि एक पूरा दिन बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको 15 मिनट पे चार्ट पे देख रहे होते, 15 मिनट्स में इधर से नीचे जाके फिर ऊपर आ सकती है। सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज लुक एट बिगर टाइम फ्रेम्स, बट यू सी हाउ इट्स इन द ओवरसोल्ड जोन ओवर हियर, और इधर से जाके इट्स पंपिंग, एंड मे फ्राइडे मार्च 10th से लेकर it took Bitcoin almost one day, and it went from $19,000 to about, so this was 10th March and this is 22nd March. So 12 days के अंदर Bitcoin jumped from 19 to 29, a move of $10,000. सही है। तो इसको जो मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो ये है कि आप ये अपने जहन में रखें कि एवरी टाइम इट कम्स इन द ओवर सोल्ड एरिया, स्पेशली ऑन द हायर टाइम फ्रेम HTF के अंदर, इट्स ऑलवेज अ क्लियर बाय। सो नाउ मैंने जो आपको टर्म बताई थी, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग, व्हाट यू विल डू इज़, जिस तरह हमने हैविंग साइकिल के अंदर प्रीवियस डाटा देखा था, आप इधर से जाके जूम आउट करेंगे, जूम आउट करते जाएंगे, ठीक है। जूम आउट जितना कर सकते हैं करें। सो नाउ आई जूम आउट ऑल द वे
and what you see is areas that you will mark, क्योंकि ये तो हमने मिनी सॉरी मैक्रो तो कर ली, लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे कि 2018 से लेकर 2023 का RSI लेवल, आप ये देख सकते हैं कि आप इस लेवल को भी मार्क करें, इस लेवल को अराउंड हियर 19, बिकॉज यू सी हाउ इट्स कम टू 19 ऑल्सो एंड देन बाउंस बैक अप, एंड देन ऊपर हम इस एरिया को भी मार्क करेंगे। ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, व्हेन आई गिव दैट this will make more sense, but right now I'm marking this area because you see how it's come over here a couple of times in the past years, and it's gone down from there. So oversold area में जब भी आए, especially HTF में, you buy the coin, whatever coin it is. So आप ये देख सकते, ये एक रूल याद रखिएगा, anytime BTC or any coin that you're looking at is in the oversold zone between 15 RSI लेवल, देखें आप इधर अगर देखेंगे तो ये 15 तकरीबन 20 पे है, ओके। सो 30 से लेकर 20 के अंदर जब आना शुरू हो जाए आप बाय करना शुरू हो जाए। सो फॉर एग्जांपल, और आप बाय करेंगे पार्ट्स के अंदर, कभी भी एक प्राइस पे बाय नहीं करेंगे। सो एक्सक्यूज मी, इफ़ यू हैव $100 and you see that on the daily time frame it's at 30 RSI level, आप इधर 20% बाय कर लेंगे, ओके। So you buy for $20, you still have $80 with you. Then you see it comes to 25, you put in another $20. Now you spend $40. And then finally if it comes to 20 and below, you put in your $60. This way आपने average out cost की होगी और वो somewhere in the middle बनेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अगर डाटा के मुताबिक, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग, एवरी टाइम बिटकॉइन हैज़ कम इनटू दी जोन्स, ये देखें इस जगह पे जब आया, इधर आया 19,000 से 25,000 तक गया, इधर जब आया 30 RSI लेवल पे, बिटकॉइन went from 20,000 all the way up to 31,000. So I hope that you get the point as to why I am marking these areas on the RSI to see data के 2017 से लेकर 2023 के अंदर बिटकॉइन कितनी दफ़ा इन लेवल्स पे आया, और जब आया HTF पे डेली टाइम फ्रेम पे तो उसको कहाँ कहाँ से बाउंस मिला और किधर किधर से रिजेक्शन मिली। ये मैंने आपको भी क्लियरली बता दिया है कि ओवरसोल्ड से हम खरीदते हैं और ओवरबॉट में हम बेचते हैं। सो दैट्स बेसिकली हाउ द RSI वर्क्स। अगेन एज वी मूव ऑन टू other lectures, we will focus more deeply into this and understand and mark support and resistance areas, which is going to be excuse me, your next lecture, which is module 4. लेकिन RSI हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ओवरसोल्ड में जब आए आप ख़रीदें, ओवरबॉट में जब जाए बेच दें, and you also look at the market structure. So now I'm going to reset the chart, right? So let's say for example, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आज अभी बिटकॉइन RSI लेवल 53 पे है और 53 से ये RSI ऐसे करके 30 पे आती है, ठीक है, 30 पे आती है, would you buy here or not? Ask yourself this on the daily time frame, okay? And if it goes over here and goes to about 70, would you start selling over here or not? Ask yourself this question, okay? So इस तरीके से आप प्रॉफिट्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। Again, we will go into these things as we move along. So I hope this is clear to you. We have covered two things for now: RSI and market structure. दो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तीसरी चीज़ जो हम कवर करेंगे, which I use, is called the QQE mod, which is this indicator over here. ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप जाके QQE लिखेंगे तो ये आ जाएगा QQE mod इन ट्रेडिंग व्यू। ये उस बंदे का नाम है जिसने बनाया है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मैं यूज़ करता हूँ इनको। बेसिकली ये वॉल्यूम आपको बताता है कि किसी भी कॉइन के अंदर, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ग्रीन का मतलब है कि इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, इसके अंदर बाइंग हो रही है। रेड का मतलब है कि इसके अंदर अब सेलिंग हो रही है। जिस भी आप
टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं कॉइन को. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे RSI भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के करीब करीब है, बट यू सी हाउ द वॉल्यूम is turning green. That means that people are buying, and RSI is also going up. And what happens next? 25,000 say it goes to about $30,000. Again, this is higher time frames, daily time frame पे देख रहा हूँ. आप इसको छोटे time frames पे देख सकते हैं LTF पे, just to get an understanding of what exactly is this and how this works. Okay, so basically अगर आपकी RSI bottom पे आई हुई है, around 30-25 पे आई हुई है, and you see that red volume is slowly going away and green volume is coming in, that means buying start हो गई है. And then जब green से आहिस्ता आहिस्ता red हो, that means, and you see the RSI is over here in the over bought zone, तो इसका मतलब है कि इधर से आपको profits लेना शुरू कर देने चाहिए. We will cover this extensively in the next lecture, which is module 4. हम इसके बारे में बात करेंगे once you understand how demand zone, supply zone, support and resistance works. But for now you need to understand that हमने market structure, RSI और QQE mod को cover कर लिया है. The final thing that we will be talking about in this module is divergences. What are divergences? और इसके अंदर भी again data determines everything. हम डेटा को देखते हुए यूज़ करेंगे और मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि हम किस तरीके से बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंसेस को स्पॉट कर सकते हैं. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, बुलिश और बेरिश टर्म्स बार बार यूज़ होंगी, बट इनका मतलब एक ही है. बुलिश का मतलब है ऊपर और बेरिश का मतलब है नीचे, लेकिन दीज कैन हेल्प यू इन स्पॉटिंग थिंग्स वेरी वेरी ईजली. अच्छा, एक और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक स्टॉच RSI. इट इज़ दिस वन. इट्स द सेम थिंग एज RSI, लेकिन इसमें गोल्डन क्रॉसेस और बेरिश क्रॉसेस होते हैं. लेकिन आपने जहन में ये रखना, जब बॉटम पे आए स्पेशली HTF में, तो यू बाय, एंड व्हेन इट्स ओवर हियर ऊपर, तो यू sell it. Okay, so now let's talk about what bearish and bullish divergences are and how you can spot them. सबसे पहले हम बात करेंगे bullish divergence की. और ये चीज़ आपने अगर वो फ्री ट्रेनिंग वीडियो देखी तो उसके अंदर मैंने आपको जो बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक मनी दिस वे एज वेल. सो आई एम गोइंग टू वंस अगेन टर्न ऑफ द बिटकॉइन प्राइस. नाउ अब मैं दो अपनी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ. आप ये इमेजिन करें, इस एरिया में मैं बिटकॉइन की प्राइस को दिखा रहा हूँ और इस एरिया में मैं आपको RSI दिखा रहा हूँ. सो बिलो हियर इज़ गोइंग टू बी द RSI. सो इफ़ आई जूम आउट लिटिल बिट, सो बिलो हियर आप ये समझे कि ये मैं आपको इस लाइन से नीचे नीचे RSI बता रहा हूँ, और इस लाइन से ऊपर इज़ गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ बिटकॉइन. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन की प्राइस है इस पॉइंट पे $1,000 और बिटकॉइन स्टार्ट्स टू डू दिस, तो सबसे पहले आपने रियलाइज़ करना है कि ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है. ठीक है, एंड आपकी RSI भी इस तरीके से ऊपर आ रही है. सो अगेन दिस इज़ RSI. सो अगर आप ये एग्जांपल लें, 1000 से ये जाता है $3,000 तक. ठीक है, $3,000 तक गया, and your RSI starts to come down. ठीक है, और BTC की प्राइस भी, सॉरी, RSI starts to come down, does something like this. ठीक है, it does something like this. और जो आपकी BTC की प्राइस है वो $3,000 से इधर आती है, और $3,000 से आप अजूम करें $4,000 तक जाती है. लेकिन जो आपकी RSI है, it makes a lower high on the RSI. So it does something like this. The price is going up, but the RSI, ये आपका अगर RSI के ऊपर हाई था, तो अगर ये
3000 से 4000 गए तो ऑब्वियसली इसको भी हायर हाई बनाना चाहिए था ना ऑन द RSI, बट ऑन द RSI it's made a lower high. Okay, so that means that it's created a bearish divergence, and it will look something like this. The price, or the price will go up, and on the RSI it will go down. So if the price is going up and the RSI is making lower highs and lower lows, that means a bearish divergence is happening and the price of the coin will come down. ठीक है? This is also called a fake out. On the other hand, अगर हम ये देखते हैं कि इधर से प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है, 3000 से नीचे आना शुरू हो गई है, राइट? And the RSI comes down also, but then makes a new high while the price is going down. So you see how price is going down, right? But the RSI is going up. This is called a bullish divergence. This is called a bullish divergence. That means that the price of the coin will go up. ठीक है? अगर बेरिश डाइवर्जेंस बना रहे इसका मतलब है नीचे आएगी, बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे इसका मतलब है ऊपर जाएगी. इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ. अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल, बिटकॉइन के चार्ट को ही देख लेते हैं. सो नाउ I will open up Bitcoin again on the HTF, and आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये देखिए कि इस पॉइंट पे you see how, let me actually draw an arrow if I could. ये रहा arrow. Okay, so you see how the price is going down, but the RSI over here is going up. So the RSI is going up. That means this is an example of a bullish divergence. Okay, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं आपको. आप बेशक LTF पे देखें या बेशक HTF पे देखें. सही है. एक और इसका एग्जांपल ये होगा कि ये देखें, इधर से आपकी प्राइस नीचे जा रही है, and then over here your RSI has started to go up. So these are bullish divergences. Bearish divergence में opposite चीज़ होगी, where the price of the coin is like this, doing this. The price of the coin is making higher highs and RSI के ऊपर lower highs बन रहे. ठीक है? RSI के ऊपर lower highs and lower lows बन रहे. That means it's a bearish divergence and it will come down. So these were some of the things that I wanted to cover in this module. Again, if there are any confusions, please go back and watch the lecture again. But if you're still confused, you can always join our free Discord community, जिसका लिंक मेरे Instagram की बायो में है. आप उधर से जाके, we have about 50,000 members as of today. उधर से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. But in today's lecture we covered market structure, then RSI, QQE mod, and then finally divergences. थोड़ा सा लंबा हो गया lecture, but I hope it was helpful, and again you can always go back and rewatch these lectures to get a better understanding. Module 4 के अंदर हम बात करेंगे support resistance की. Again, very very important lecture, demand zone, supply zone, and how whales operate, and how you can at least have the mindset of bigger traders जो बड़े पैसों से या ज़्यादा पैसों से ट्रेड करते हैं. उसके बारे में हम मॉड्यूल 4 के अंदर बात करेंगे. But that is it for module 3. Congratulations, you've now completed almost 30% of the course. You should be proud of yourself. You're learning all these things, and like I said, as we move along and as you learn more things, you will combine all these things and become a better trader
and before the bull market starts in 2024, you will learn this as a skill and then make lots of money in the bull market in 2024 and 2025. I will see you guys in the next lecture. Take care.